The following is a class on the Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Punya Vihari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Swaparang Sapaitai Vataya Vati Alam Kodi Vaishnava The following is a class on the Srimad Bhagavatam, second canto, third chapter, text number 24, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on June 22nd,
1972, in Los Angeles. Translation. Certainly that heart is steel-framed, which in spite of chanting the holy name of the Lord with concentration, does not change when ecstasy takes place, and tears fill the eyes and hairs stand on end. Here is one word, steel frame. Nowadays, the medical science is changing the heart steel frame. So, this modern science is making steel framed heart, but we can understand that formally also there are steel framed heart. Otherwise, how this word comes? Sadasmasanam hridayam vatidam. So, just like stone or steel, it does not melt very easily. Similarly, anyone's heart, it does not change after chanting Hare Krishna mantra regularly. Then it is to be understood that it is steel frame, made of stone or iron. Actually, Harinam, Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam, it is especially meant for cleansing the heart. Where all misconception is within our heart. Beginning from the wrong identification that I am this body. There is the beginning of all misconception. So, Chaitanya Mahaprabhu says, Chetadarpana Mad. As you go on chanting, gradually the heart will be cleansed and you will be able to understand that you are not this body. That is called Jnana Vairagya. Jnana means to know thoroughly that I am not this body. This is Jnana. And as soon as you know that you are not this body, naturally you become disinterested with anything which has got bodily relation. The Chetadarpana Marjanam, Bhava Mahadavagni Nidpapanam. Bhava means repetition of birth and death. You become. Bhava means. So you become means you die also. Because this is the word. To become does not mean that you stay forever. That is not possible. You become means you die also. So, but under wrong impression, as soon as I become, I think that this world is very nice. The Bhaktivinoda Thakur sings that, my dear Lord, when I was in the womb of my mother, at that time, I saw you once became visible. Those who are spiritually advanced, they can see God within the womb of the mother. When the child remains packed up and the consciousness is gained, he feels very uncomfortable. So at that time, one who is pious, spiritually advanced,
he prays to God, please rescue me from this bondage. I am too much suffering. And this time, after taking my bath, I shall simply be engaged in Krishna consciousness. Promises. But Bhaktivinoda Thakur says, Janama haila parimaya jale. As soon as birth is taken, the Maya is there, we forget. Immediately, father, mother, other relatives, they take up the child and pats very nice. So in this way, we forget that we were in such a precarious condition, almost suffocating, almost it is suffocating. After coming out from the womb of the mother, if you are packed up again in such airtight bag, within 3 seconds you will die. We live under the protection of the Supreme Lord, otherwise that is not a living condition. Just imagine within the home. So, this we forget, and being taken care of, affectionate father and mother on the land, we think life is very nice, this life. But this is Maya, this is illusion. Actually, this bhava, to take birth, is very, very unpleasant task. It is blazing fire, bhava mahadava. So, if we can cleanse our heart during this life, this is the opportunity. It is not possible when I take birth as an animal, cats and dogs, that is not possible. But as I have got now this human form of body, we should not be again misled. Chetadarpana marjanam bhavamadam. If we can cleanse our heart, then this blazing fire of repetition of birth and death can be extinguished. But the illusory energy is so strong that we forget our last death time miseries. At the time of death we suffer very much, so that just imagine when we give up our life, how much a difficult position at that time. So we forget birth and death. As soon as there is birth, there is death also. Death means the more you are advancing in age, that means you are dying. You are advancing in death. The child is born. When this child is born, just yesterday, that means he has already died one day. So in this way, death is progressive. As soon as there is birth, the death is immediately, side by side. I am 1 day old means I have died one day. I am 76 years old, but I have already died 76 years. Suppose I live, say, 80 years, 90 years. So I have already died 76 years. So death is sure. They say we are advancing. What is that advancement? Death is sure. You cannot control birth, death, old age. You cannot stop old age. And disease. You can manufacture nice medicine, but you cannot stop disease. So we have become still-hearted, still-framed heart. We do not consider all these things. These are practical. And still we are under the impression that we are advancing in material civilization.
So we are advancing in the art of cutting stone and wood, that's all. This is our advance. Just like in your country, within 2 months they can build one wood house. An expert in cutting wood, this is advance. Wood cutter, stone cutter. But we are not meant for cutting wood and stone. We are meant for understanding our spiritual identity. There are many birds, a woodcutter bird. So that is not very expert manifestation of our intelligence. So, this cleansing of heart will be possible by Harinama Dheyi, this chanting of Harinama, 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 Harinama iva kevalam, kalau nasti, vanasti, vanasti, vanasti. That anything, any spiritual process is meant for cleansing the heart. Either you take karma yoga, or jnana yoga, or dhyana yoga, or bhakti yoga. The ultimate goal is that cleansing the heart. At the present moment, I am under misconception, dirty things accumulated on my heart, that I am this body, and therefore I do not try to realize that I am soul, and under bodily concept of life, as the animals, they are also in bodily concept of life. They are busy eating, sleeping, mating, and defending. Similarly, human civilization has become like animals. They are interested only in eating, sleeping, mating, and defending. That's all. But that is not our position. It is a chance to get out of the entanglement of birth, death, old age and disease. This is our real business. Cetadarpanamarjana. We are misguided. Our so-called leaders are misleaders. They do not know what is the aim of life. That is the difficulty at the present moment. Not at the present moment, in the material world, this problem is always existing, but due to this Kali age, that problem is more acute. That's all. So, this chanting of Hare Krishna mantra, without offences, 10 kinds of offences, will cleanse the heart, and then we will be liberated. Cetadarpana marjanam bhava mahadavagni, because we will know the path, how we can get out of these clutches of birth and death. There are so many big scientists, philosophers, they don't talk of this important subject matter, how to get out of birth and death. They have no solution. But our Krishna consciousness movement is giving us the knowledge that you can get out of these clutches of birth and death, old age and disease. That is our desire. Nobody wants to die. Nobody wants to go again into the womb of the mother. Nobody wants disease. Nobody wants old age. But the so-called scientists, they have no proposal to get out of this clutch. Here, Srimad Bhagavatam gives you a hint that Harinama Devi, by chanting Harinam, Harinama, Harinama, Harinama iva kevalam, you can get out of this. And when Harinam will be perfect, and that symptoms are given here. Netre jalam, gatra rohi suharsa.
by chanting when he, not always, he sometimes out of ecstasy, when tears will come down, and there will be shivering on the body, that means you are coming to perfection. This is not to be artificially practiced. When you actually come to the perfectional state, these will automatically appear. So, this verse suggests that if a person is chanting Hare Krishna mantra, but his eyes are not tearful, or there is no ecstatic shivering of the body, then that means he is not coming to the perfection of mind. So if we chant this Hare Krishna mantra without offense, according to observing regulative principles and numerical strength, Sankha Purvaka Nama Gananativi, the Goswamis in Vrindavan, they used to chant keeping a numerical strength. They were all liberated persons. Still, for teaching us an example, they also used to chant keeping a numerical strength. Haridas Thakur, he used to chant Hare Krishna mantra keeping a numerical strength 300,000 times. 300,000 times. So our prescription is only 25,000. Not 100,000. So it is not very difficult. It takes at most 2 hours. We can find out of 24 hours, 2 hours. We can find out time. So if we actually follow the rules and regulations and chant Hare Krishna mantra, then these symptoms will come. Netre jalam gatra ruheshu harsha. When this comes, then you know that I am coming to perfection. And if it is not coming, then it is to be understood the heart is still frame. Still frame, so it is still only, stone. The stone, if we keep our heart stone, a still frame, then it cannot be melted. These symptoms mean heart is melting or changing.
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today reading from Srimad Bhagavatam, 8th canto, 5th chapter, text number 27. Vipashchitam panamano diatmanam atendriyabhasam manidram abranam chayatapa jatra nagidra paksha tamaksharam kham triyugam brajamahe Vipashchitam pranamano diatmanam atendriyabhasam manidram abranam chayatapoyatra nagridra paksha tamaksharam kam triyugam brajamahe. Vipashchitam pranamano diatmanam atendriyabhasamanidram abranam ayatapojatra nagidra pakshau naraksharam kam triyugam brajamahe. Vipashchitam pranamano diatmanam atendriyabhasamanidram chayatapojatra nagidra paksha tamaksharam kham triyugam brajamahe. Vipashchitam pranamano diatmanam marthendriyabhasam nidramamaram chayatapojatra nagridra paksho Vaishnavis. Vipashchitam pranamano diatmanam atendriyabhasamanidra brajam chayatapojatra nagidra paksha tadaksharam kam triyugam vijamahe. You can do word for word. शब्दार्थ इस प्रकार है विपश्चितम सर्वज्ञ को प्राणा किस तरह प्राण कार्यशील है मना किस तरह मन कार्यशील है धिया किस तरह बुद्धि कार्यशील है आत्मना सारे जीवों का अर्थ इंद्रिय विषय इंद्रिया आभासम ज्ञान अनिद्रम सदैव जागृत तथा अज्ञान से मुक्त अव्रणम
सुख तथा दुख से प्रभावित होने वाले भौतिक शरीर के बिना छाया आतपो अज्ञान से दुखी समस्त लोगों के आश्रय यत्र जहाँ नहीं गृध्र पक्षो किसी भी जीव का पक्षपात तम उसको अक्षरम अच्युत खम आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त त्रियुगम तीन युगों सत्य त्रेता तथा द्वापर में 6 ऐश्वर्यों समेत प्रकट होकर प्रजामहे मैं शरण ग्रहण करता हूँ। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक हैं और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकतावादी विद्या के अज्ञान से मुक्त हैं। अतएव मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो नित्य सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल है और तीनों युगों सत्य त्रेता तथा द्वापर में अपने षड ऐश्वर्यों समेत प्रकट होते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। जन्मादस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थे स्वभिज्ञ। भगवान समस्त उद्भावों के उद्गम है और वे अपनी सृष्टि के भीतर होने वाले प्रत्येक कार्यकलाप के विषय में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। अतः भगवान को यहाँ पर विपश्चितम कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है समस्त ज्ञान से पूर्ण या सब कुछ जानने वाला। भगवान परमात्मा है और वे सारे जीवों तथा उनकी इंद्रियों के विषय में सब कुछ जानते हैं। इस श्लोक में अनिद्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सदैव जागरूक तथा अज्ञान से रहित। जैसा कि भगवत गीता 15:15 में कहा गया है, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान ही हर एक को बुद्धि प्रदान करते हैं और उनमें विस्मृति उत्पन्न करते हैं। प्राणियों की संख्या करोड़ों करोड़ में है और भगवान उनको निर्देश देते हैं। अतः उन्हें सोने के लिए समय ही नहीं रहता और वे हमारे कार्यकलापों से कभी भी अनभिज्ञ नहीं रहते। वे हर एक घटना के साक्षी हैं। हम प्रतिक्षण जो भी कर रहे हैं उसे वे देखते रहते हैं। भगवान कर्म से उत्पन्न शरीर से प्रच्छन्न नहीं रहते। हमारे शरीर हमारे विगत कर्मों के फल स्वरूप निर्मित होते हैं, कर्मणा देव नेत्रेणा, किंतु भगवान के भौतिक शरीर नहीं होता। अतः उनमें अविद्या नहीं रहती। वे सोते नहीं अपितु सदैव सतर्क तथा जागृत रहते हैं। भगवान को त्रियुग कहा गया है क्योंकि वे सतयुग, त्रेता तथा द्वापर युगों में नाना रूपों में प्रकट हुए थे, किंतु जब वे कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने आप को कभी भगवान घोषित नहीं किया। कृष्ण वर्णम युषा अकृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षदम। भगवान कलयुग में भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह यद्यपि वे कृष्ण होते हैं किंतु वे भक्त की भांति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। फिर भी श्रीमद् भागवत संस्तुति करती है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका रंग कृष्ण की भांति सांवला नहीं है अपितु सुनहला त्विषा अकृष्ण है, भगवान है। उनके साथ नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास जैसे पार्षद रहते हैं। जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे संकीर्तन यज्ञ द्वारा इन भगवान की पूजा करते हैं। इस अवतार में भगवान अपने आप को परमेश्वर कहकर घोषित नहीं करते, अतः वे त्रियुग कहलाते हैं।
Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Rashatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, in this prayer by Lord Brahma, he is describing the secondary aspects of the Lord. तो ये जो प्रार्थना ब्रह्मा जी के द्वारा बोली जा रही है, इसमें वो भगवान के द्वितीय जो क्रिएशन का सृष्टि का कारण है उसके बारे में बता रहे हैं. The primary aspects means Yashodanandana, Nandanandana, direct names of Krishna in relation to his devotees or to his lila. तो जो प्रथम मुख्य अंग है वो है भगवान का नाम, जैसे यशोदानंदन, देवी के नंदन, जो भगवान के भक्तों से द्वारा उनको ये नाम दिया गया है उसके रिलेशन में उसके. When his lila is in relation to Vrindavan, Dwarka, Ayodhya, then that is his primary lila. तो जब भगवान की जो लीलाएं हैं वो वृंदावन, द्वारका, अयोध्या इनसे संपर्क रहती है तो वो प्रथम भगवान की लीला है. And when it's in relation to material energy, it's called his secondary lila. और जब वो भगवान की जो लीला है वो इस सृष्टि की रचना के संपर्क में रहती है तो उसको द्वितीय रचना कहते हैं, द्वितीय लीला. When Brahma began to offer these prayers in verse number 25, it says, Daivi Bir Gribhis, which means he's speaking from the Vedas. तो जब ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं इस अध्याय के 25वें श्लोक में, तो वो जो है बता रहे हैं कि मैं वेदास से आपको एक प्रार्थना कर रहा हूँ. Srila Prabhupada taught us that when we speak, we should speak with Vedic authority. प्रभुपाद जी कहते थे कि जब हम बोलते हैं तो हमें शास्त्र के आधार पर अपने बातों को रखना चाहिए. And before we describe Krishna in Vrindavan, which is mostly rasa, तो पहले भगवान की रास लीला वर्णन करने से पहले we have to understand Krishna in relation to his tattva, the truth about him. तो उससे पहले हमें भगवान को तत्व रूप में समझना चाहिए. So, because we are in the material world, Lord Brahma is describing that truth that is related to what we know, which is matter. तो क्योंकि हम सब भौतिक संसार में हैं, तो ब्रह्मा जी भगवान को पहले इस भौतिक सृष्टि के संपर्क में हमें समझा रहे हैं, उनके संबंध में समझा रहे हैं. In the previous verse, Lord Brahma glorified the Lord as being unlimited. तो इसके पहले श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान को अनंत के रूप में बता रहे हैं. And in the first line of this verse, it says, He understands our limited nature, the body, the mind, and the intelligence, which are limited. तो अभी इस श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हमारे लिमिटेड नेचर, जो हमारा मन, बुद्धि और जो हमारा बुद्धि है, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब एक सीमित है. उस संपर्क में ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं. Because because of our limited experience, we think that the mind and the intelligence, our mind and our intelligence, are unlimited. क्योंकि हमारा जो अनुभव है वो निश्चित है, वो सीमित है, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा मन बुद्धि जो है वो अनंत है, वो सब कुछ जानता है. Srila Prabhupada, in his lecture, he was speaking about how the scientists and philosophers, they think they're figuring everything out. प्रभुपाद जी बताते हैं अपने लेक्चर में कि साइंटिस्ट लोग
This is called Atmaman Manyate Jagat, that I want to fit everything into my little brain. तो इसको कहते हैं आत्मक मन्यते जगत, कि मेरे बुद्धि में सब कुछ समाया है, मैं सब कुछ जानता हूँ. And therefore, this is called ahankar. और इसीलिए इसको अहंकार कहते हैं. Yeah, that we want everyone, we are very proud to exhibit how much I know. तो हमें बड़ा अहंकार आता है ये बताने में कि मुझे कितना पता है. And here, Lord Brahma says, we don't know anything. और यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता. Just like even Brahma, with his great intelligence, could not understand Krishna. ब्रह्मा जी जिनका पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, वो भी नहीं समझ पाए कि कृष्ण क्या है. He, in his first prayer in 10th canto, chapter 14, he says, "My Lord, I will never become bewildered again by your opulence." तो ब्रह्मा जी 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं अब और आपकी लीलाओं से कभी भी विचलित नहीं होने वाला हूँ. You're standing before me with a stick in your hand and some butter. और आप मेरे सामने एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में मक्खन लेकर खड़े हो. Very easy to become confused. It's just a little boy. और ये रूप देख करके तो कोई भी व्यक्ति जो है वो विविल्डर हो सकता है या समझ नहीं सकता कि कौन है ये. Even Indra thought also, this little boy, why is he stopping my yajna? और इंद्र ने भी ऐसे सोचा था कि छोटा सा बालक है, ये मेरे यज्ञ को क्यों रोक रहा है. So, but then both of them learned very quickly who is Krishna. लेकिन दोनों को तुरंत समझ गए कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है. It's very interesting in when the Lord expanded himself in the form of the cowherd boys and then revealed that it was him before Lord Brahma. तो ब्रह्मा जी के सामने भगवान ने अपने आप को बहुत सारे एक ग्वाल बालों में विस्तृत किया था, लेकिन वो सब कृष्णा थे और ये ब्रह्मा जी को दिखा कि ये सब कृष्णा है. One of Brahma's observations is that the personification of one's prakriti, one's nature, became manifest. तो ब्रह्मा जी के समझ में आया कि भगवान की जो पर्सोनिफिकेशन, जो उनका स्वभाव है, वो सामने उनको दिखा, भगवान का भाव. And Srila Prabhupada says that in Krishna consciousness, we can actually change our nature. और प्रभा जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं. Even though Krishna teaches in Bhagavad Gita that one should perform devotional service according to one's nature. और हालांकि भगवान गीता में कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपने स्वभाव के हिसाब से सेवा करनी चाहिए. But in the Bhagavatam, it teaches us to that by bhakti our nature can evolve. लेकिन भागवतम सिखाता है कि भक्ति से हमारा स्वभाव जो है वो और उभर के आता है. No, we can become. We're not limited by this material energy. तो ये जो भौतिक शक्ति से वो हमें सीमित नहीं कर सकती है. In the beginning of the first canto, in the second chapter, there is a series of verses where it encourages us to go beyond the three modes of nature. तो पहले इसके दूसरे अध्याय में एक श्लोकों की श्रृंखला है जो हमें बहुत उत्साहपूर्ण देती है कि हमें कैसे तीन गुणों से ऊपर जाना है. Tata rajas tamo bhavo janata lobhayas chaye, that we should go beyond these modes of nature. तो ये श्लोक बताते तथा रजस तमो भावो काम लोभ दयश्च कि हमें ये तीन गुण से ऊपर जाना है. And how do we do that? हम कैसे कर सकते हैं वो? Shinvatam swakata Krishna punya shravana kirtanam, by always chanting and hearing the glories of the Lord. और हम ये कर सकते हैं सदैव भगवान के बारे में सुनना और उनका कीर्तन करना, गुणगान करना. It says, I believe, let me see. In one of the previous purports, Srila Prabhupada, it's stated by Lord Brahma that he could not see the Lord. तो उस श्लोक पहले ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो भगवान को देख नहीं पाए. Just like yesterday, we were discussing Gajendra in the class in Chopati. तो महाराज बता रहे कि कल वो चौपाटी में गजेंद्र के बारे में चर्चा कर रहे थे. And Gajendra was in anxiety and he was praying to the Lord. तो गजेंद्र जो बहुत ही विचित्र अवस्था में थे और वो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे. The demigods became a little envious.
तो जो देवता लोग थे वो थोड़ा सा ईर्ष्या करने लगे. They were thinking, why isn't he praying to me first? तो वो बोलने लगे ये मुझे क्यों प्रार्थना नहीं कर रहा है पहले. So the demigods were thinking, we can't see the Lord, we can't approach him so easily, we have to go through Brahma, a big process. तो ये देवता लोग सोचने लगे कि हम भगवान को इतना जल्दी नहीं देख सकते हैं, हम लोग भी ब्रह्मा के थ्रू जाते हैं. Who is this foolish elephant? He thinks that the Lord will listen to him. ये कौन मूर्ख हाथी आ गया जो सोचता है कि डायरेक्ट भगवान इसको आके दर्शन देंगे. But then they were very surprised. Lord Vishnu appeared. No. और वो बहुत अचंभित हो गए, भगवान आ गए. They were thinking he'll just die with his useless prayers. No. और लोग सोचे कि ये फालतू का प्रार्थना कर रहा है और ऐसे ही मर जाएगा ये. And then they thought, oh, we committed an offense. He is a great devotee. और फिर बाद में लगा रहे हमसे तो अपराध हो गया, ये तो बहुत महान भक्त है. So they came behind the Lord to offer obeisances and ask for forgiveness. तो वो लोग भगवान के पीछे आए और गजेंद्र से माफी मांगने के लिए आगे बढ़े कि माफ कर दीजिए हमें. So Srila Prabhupada, especially in his purport, he emphasizes the word anidram. प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में अनिद्रम शब्द पर बड़ा जोर दे रहे हैं. The Lord is never sleeping, भगवान कभी सोते नहीं. but he creates all the unlimited material universes while he's sleeping. लेकिन आप देखोगे वो सोते सोते तो बहुत अनंत ब्रह्मांड बना देते हैं भगवान. Just to show we have to make so much effort just to make a little money. You know? हम लोग थोड़ा पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है. And it's not even good money, और वो भी अच्छा पैसा नहीं, मतलब paper money, you know? पेपर मनी Digital money. No, या डिजिटल मनी doesn't even exist. जो अस्तित्व भी नहीं है इसका. Some expert hacker can go in and wipe out your whole fortune in one second. हैकर आपके अकाउंट में घुस के आप पूरा जीरो कर सकता है उसको. Previously there was gold, then silver, and then paper. Now some countries they make plastic, not even paper, but plastic money. तो पहले सोना था, चांदी आया, अभी पेपर आया, और आज के मान बता रहे हैं कुछ देशों में प्लास्टिक भी यूज होता है. And now digital money, you know, और अब डिजिटल आ गया है. because digital money is very good for the government. They can control. डिजिटल मनी सरकार के बहुत अच्छा है क्योंकि वो कंट्रोल रख सकते हैं उस पर. That's why all the very wealthy people in India, they keep gold and jewels and everything. They can't control that very easily, you know. तो इसमें बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं वो लोग बहुत सारा सोना चांदी सब रखते छुपा देते हैं. Just like nowadays, they say, oh, to help us process things quickly, we're recording your biometrics. तो इसलिए आजकल कई लोग बायोमेट्रिक्स यूज करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं अरे हमें बचाओ इससे क्योंकि ये लोग में सारे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. But the real purpose is we can control you. No? तो लेकिन वो बायोमेट्रिक्स लेने का तरीका क्या, सरकार का उसके पीछे उद्देश्य है आपको कंट्रोल करना. In the name of safety, oh, well, that way we can make sure that everyone is safe. No. तो वो बताते हैं कि आप सुरक्षित हो, लेकिन वास्तव में वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं. But the idea is control. तो उसके पीछे जो भाव है वो कंट्रोल करना है. My good friend Devamrita Swami, he had a very close relationship with the Prime Minister of New Zealand. तो परम पूज्य देवामृत स्वामी के महाराज बता रहे हैं उनके बारे में कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से उनका बहुत अच्छा मित्रता था. So one time they were talking, and the Prime Minister had just come back from a world summit. तो वो लोग एक बार बात कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर पूरे दुनिया में वर्ल्ड समिट से एक बार आए थे. And so he asked him, what do you talk about in these world summits? No. तो देवामृत महाराज ने पूछा कि आप लोग ये वर्ल्ड समिट में बात क्या करते हो. And he said, the main thing is how can we control the population? तो बोले सबसे मेन मुद्दा होता है कि हमारी जनता को कैसे कंट्रोल करें. He said all the world leaders admire very much China. You know. सारे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो चाणक्य, they have everyone under control. हाँ चाइना को अप्रिशिएट करते हैं. They have everyone under control. क्योंकि वो उसकी जो सरकार है वो सभी लोग को अपने अंडर कंट्रोल में रखती है. Just like in India, there's not so much control. No? भारत में ना कंट्रोल नहीं है. It's good that they're not following China. You know. तो अच्छा है कि वो लोग चाइना को फॉलो नहीं कर रहे. So the point is that the Lord is a nidra to create everything that is even beyond our fullest imagination. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भगवान सोए सोए जो है इतना सब क्रिएट कर देते हैं जो हमारे कल्पना से भी बाहर है. The scientists, they tell us we're looking out into space, we can see so many
systems and stars and black holes. A black hole means they don't know. तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि हम लोग इस अंतरिक्ष में बहुत कुछ देख रहे हैं और वहां पर एक काला छेद है, ब्लैक होल. लेकिन ब्लैक होल का मतलब ये कि आपको नहीं पता हो क्या है. They have no idea what is the black hole. उनको कुछ पता नहीं है ब्लैक होल है क्या. And because their brain is a black hole. क्योंकि उनका दिमाग जो है वो ब्लैक होल है. In 1975 or 1974-75 in the US and in Europe, there were many people that were accusing us of deprogramming people and brainwashing them. तो 1974-75 में ISKCON पे आरोप लग रहा था कि ये लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं. Say we were taking away their freedom. और हम उनसे उनकी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं. But according to Bhagavad Gita, we were giving them freedom. No. लेकिन भगवता के हिसाब से हम तो उनको फ्रीडम दे रहे हैं, हम तो उनको उनकी स्वतंत्रता को वापस दे रहे हैं. As it says here, freedom from the senses, freedom from the mind, freedom from the intelligence, they keep us imprisoned in the material energy. तो जैसा है बताया गया कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, ये हमको इस जेल कारागार में बंद के रखती है. So they told Prabhupada, we have these big court cases. They're trying to prove that our movement is a cult, and they want to shut us down. तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ये हम पर बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है और हमारे इस मूवमेंट को पूरा रोकना चाहते हैं ये हम मुकदमा करके. So all the leaders came, 1975 Mayapur festival, waiting for Prabhupada to tell us what to do. तो सारे जो उस समय लीडर्स थे ISKCON के वो 1975 में मायापुर आए थे और प्रभुपाद जी का इंतजार करते वो क्या बोलेंगे इसके बारे में. So Prabhupada called everyone, they all came running. There were so many leaders, they were in the windows, in the doorway, everyone, as many could fit inside, everyone listening, waiting for this great revelation. तो प्रभुपाद जी सबको बुलाए रूम में, तो सब लोग कोई खिड़की से झांक रहा है, कोई दरवाजे झांक रहा है कि प्रभुपाद जी भी क्या रिवील करेंगे, क्या बड़ा चीज बताएंगे. And Prabhupada was very casual. He took his pen, he was looking at it like this, didn't say anything for about 2 minutes. लेकिन प्रभुपाद जी बहुत आराम से थे, अपना पेन उठाया और उसको देख रहे, 2 मिनट तक खाली देखते रहे. And then he said, so they say we are washing the brain. तो प्रभुपाद जी थोड़ा ग्रेव मुद्रा बोले, तो क्या वो लोग सोच रहे कि हम उनका दिमाग धो रहे हैं. Prabhupada said, what is the problem? If the brain is dirty, it must be washed. प्रभुपाद जी ने कहा इसमें समस्या क्या है, अगर उनका दिमाग गंदा है तो धोना ही पड़ेगा ना. And then Prabhupada said, but in any case there is no problem. प्रभुपाद जी बोले फिर भी लेकिन कोई समस्या नहीं है. Because they have no brain. क्योंकि उनके पास दिमाग ही नहीं है. So we think we're very intelligent, we can see, no, therefore the Lord shows us that He creates something beyond our ability just by sleeping. तो हम सोचते हैं कि हम इतने महान हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन आप देखिए भगवान सोए सोए इतना कुछ चीज बना दे रहे हैं जो हमारे कल्पना से बाहर है. So what does it mean when Srila Prabhupada says that Anidra, he's always awake? तो इसका मतलब क्या है जब प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि अनिद्रा वो हमेशा जागृत अवस्था में. It means that the Lord expands Himself into Paramatma and is taking care of all these things that Srila Prabhupada lists here. तो इसका मतलब है कि भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में विकसित करते हैं, विस्तारित करते हैं और इन सारे चीजों का ख्याल रखते हैं. He's giving them intelligence, He's giving them directions how to act. तो परमात्मा जो है हमें बुद्धि देते हैं, हमें गाइड करते हैं कि कैसे हमें व्यवहार करना है, क्या करना है. And the ones that are especially fortunate, He is giving them difficulties so that they will become detached from material nature. और जिस पर भगवान की कृपा होती है तो भगवान उसको तकलीफ देते हैं जीवन में ताकि वो इस संसार से आसक्ति छूट जाए, उसकी निरासक्त हो जाए. As it says here, chaya tapao, that they're living in the shadow of Maya. तो ये जो जीवात्माएं हैं ये सब माया के परछाई में जीवन जी रहे हैं. And Lord Brahma says, my Lord, you have no body, therefore you have no ignorance. तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं पर हे भगवान आपका तो शरीर ही नहीं है तो इसलिए आपके अंदर कोई भी तमोगुण नहीं हो सकता. You have a spiritual body, Satchit Ananda. आपका आध्यात्मिक शरीर है सच्चित आनंद. But the materialistic people cannot understand. They think the Lord is making them suffer unjustly. लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति ये नहीं समझ सकता, उसको लगता है कि भगवान जो है उनको जानबूझ करके
कठिनाई दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। Even Einstein, who was like one of the most brilliant, materially speaking, most brilliant scientists in modern history. तो इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि आधुनिक युग में एक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट था, बहुत ही बुद्धिमान था, He was reading Bhagavad Gita daily, वो हर दिन भगवद्गीता पढ़ता था, but he couldn't understand Krishna, Vrindavan Krishna, Braja Krishna. He could not understand. लेकिन वो वृंदावन व्रज कृष्ण को नहीं समझ पाए। He was thinking that there must not be a personal God, there must be an impersonal God. तो उनको ये समझ में आ रहा था कि यहाँ एक साक्षात भगवान है जो एक व्यक्ति है, वो एक ब्राह्मण को भगवान समझ रहे थे, इम्पर्सनल व्यक्ति को। He read some Vedanta. He had some friends from India, and so he concluded that God is impersonal. उनके कुछ दोस्त मित्र थे भारत से, लेकिन उनका यही निष्कर्ष था कि भगवान जो है वो निराकार है। Because he thought, if God was a person, how could he allow the Holocaust when all the Jewish people were killed? No. तो वो सोचते थे कि अगर भगवान एक व्यक्ति है, तो आकार है उनका, तो वो कैसे है हॉलोकास्ट कि इतने लोग मरते जा रहे हैं, वो कैसे अलाउ कर सकते हैं भगवान? So he was thinking the Lord is Gridra Paksha, that the Lord is partial. तो वो सोचते थे कि भगवान जो है वो पक्षपात करते हैं। But the Lord is impartial. लेकिन भगवान तो किसका पक्षपात नहीं करते। He, as Queen Kunti said, that Navedakas chit Bhagavan chikirshitam. Your pastimes are so wonderful, my Lord, but who can understand them? जैसे कुंती महारानी कहती है, भगवान आपकी लीला इतने दिव्य है, लेकिन कौन समझ सकता है इसको? Tabahe manasya rimam vidambanam. They're very bewildering because you apparently are just like us in human form. तो ये जो है बहुत विडंबित करने वाली है, क्योंकि आप ऐसे अवतरित होते जैसे हम में से एक हो आप। And therefore, because you have this form of 2 arms and 2 legs, we think just like us, you're partial. You discriminate. और जैसे क्योंकि आपका भी 2 हाथ 2 पांव है, हम जैसा हमको लगता है कि जैसे हम पक्षपात करते हैं, वैसे आप भी पक्षपात करते हो। But nayasya karchit daito hikarichit dvashas. But you are not partial to anyone, nor do you dislike anyone. लेकिन आप जो है आप किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते और आप किसी से भी द्वेष नहीं करते हो। Vishama matir ninam. This is a conception of the ignorant people of this world. ये जो है ये खाली लोगों की भ्रांता है इस दुनिया की। Samaha sarvabhuteshu namidvashtu stina priyaha. Krishna says, I'm not partial to anyone. I don't favor anyone and I don't dislike anyone. तो भगवान गीता में कहते हैं समहम सर्वभूतेषु, मैं द्वेष्टि ना सप्रिया, मैं किसी से प्रेम नहीं करता या मैं किसी को भी द्वेष नहीं करता हूँ। Then why do people think that I am partial? लेकिन लोग क्यों सोचते हैं कि मैं जो हूँ मैं पक्षपात करता हूँ? Ye bhajante namam bhaktya. Because when someone worships me, I reward them. तो लेकिन जब कोई मेरी उपासना करता है तो मैं उनको वैसा ही फल देता हूँ। Ye tamam prabhajante times tataiva bhajamyaham. I already said that I interact with people according to their level of surrender. तो भगवान कहते हैं ये था मैं प्रपद्यन्ते ताम सदा भजामि हम, जो मुझे जैसे तरह उपासना करेगा मैं उसको वैसा ही रिवॉर्ड करूंगा, वैसा ही फल दूंगा। Those that are following me indirectly, I interact with them through my material nature. हाँ, तो जो लोग मुझे इनडायरेक्टली मेरे को अप्रोच करना चाहते हैं, उन लोग को मैं भौतिक प्रकृति के द्वारा उनसे संपर्क में रहता हूँ। But those that interact with me personally as Krishna, then I reward them for their devotional service. लेकिन जो लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से मेरे से संबंध बनाते हैं, मैं उनको उसी प्रकार से उनसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। Therefore, there's no partiality. Anyone can surrender to me. No. इसलिए कोई पक्षपात नहीं है, कोई भी मुझे सरेंडर कर सकता है, मुझे शरणागत हो सकता है। My requirements, anyone can fulfill those requirements. तो मेरी जो जरूरत है उसको कोई भी पूरा कर सकता है। Patram pushpam palam toyam yome bhakta prayachiti. I just ask for a leaf, a little water. Who cannot provide that? तो मेरा जो दरकार है, मुझे बहुत कम चीजें चाहिए, खाली एक पत्ता, पानी, जल, यही सब चाहिए। I say just offer it to me with bhakti, with love. केवल इसको तो भक्ति से मुझे अर्पण करो। That is the hard part. लेकिन वो बहुत मुश्किल है। Because we love this body.
क्योंकि हम इस शरीर से प्रेम करते हैं and we love the extensions of the body. और हम इस शरीर के जो एक्सटेंशंस है, जो विस्तृत चीजें हैं, उनसे प्रेम करते हैं. Actually, Lord Chaitanya says that pratipadam putam mitasvadanam, that everyone at every step is just looking for Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर व्यक्ति हर कदम कदम पर भगवान को ही ढूंढ रहा है. But they find very poor substitutes for Krishna. लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कृष्ण को रिप्लेस कर सके, जो सब्स्टिट्यूट कर सके. I love my family members. हमें अपने परिवार वालों से बहुत प्रेम होता है. I love my country. हमें अपने देश से बहुत प्रेम होता है. It's like in every country, the leaders will say, God bless India, God bless America, God bless this. No. तो हर देश में आप जाओगे, वो वहाँ का लीडर बोलता है कि भगवान भारत पर कृपा करे, भगवान अमेरिका पर कृपा करे, अपने अपने देश के बारे में बोलते हैं. Bless India, but don't bless Africa. No. तो भारत पर कृपा करो, बट अफ्रीका में कृपा मत करो. Because then we can't exploit them. No. क्योंकि हम इन लोगों को नहीं तो हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे. So, therefore, people cannot understand Krishna. इसलिए भगवान को लोग नहीं समझ सकते. So, when it says anidra, it means that Krishna is always awake, waiting for his devotee to call out to him. तो अनिद्रा का मतलब है कि भगवान हमेशा जागरूक है, कब मेरा भक्त मेरा नाम पुकारेगा. And how can we call him when he's so far away? लेकिन हम उनको कैसे पुकारे, इतना दूर है वो. Here it says that yagyai sankirtana prayayar yachanti hisu medasaha. If you have a little intelligence, then you will call out by saying Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम 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 हरे हरे. तो अगर आपके पास थोड़ी सी बुद्धि है तो आप इस तरह कॉल करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. And Krishna is awake 24 hours just waiting. No. भगवान 24 घंटा जागरूक है, जस्ट सुन रहे कब ये मेरा नाम बोलेगा. Therefore Lord Chaitanya taught us, why sleep? Stay up all night chanting the holy name. No. इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, काहे के लिए सोना, रात भर जगो और नाम जप करो. Even in Goloka Vrindavan, Krishna doesn't sleep. No. गोलोक वृंदावन में भी भगवान सोते नहीं है. It seems like he's sleeping. ऐसा लगता है कि वो सो गए, but he has no time to sleep. लेकिन उन पर समय ही नहीं है सोने के लिए. All day long he's playing with his cowherd boys and giving pleasure to his parents. और दिन भर जो है वो अपने ग्वाल बालों के साथ और अपने माता पिता को जो आनंद देते रहते हैं. And all night long he's enjoying with the gopis. और रात भर जो है गोपियों के साथ वो भ्रमण करते हैं, एंजॉय करते हैं. Therefore no sleep. इसलिए कोई सोने का सवाल नहीं है. But when he comes back, just like we have Mangal Artik in the morning, that the actual internal purpose is that Krishna is just coming back from his nighttime pastimes. तो जब हम मंगल आरती करते हैं तो उसका जो आंतरिक कारण है वो है कि जस्ट भगवान अभी अपने रात्रि लीला को समापन करके आए हैं. And he's in such a blissful mood that he wants to give darshan to all his devotees. और वो इतने आनंद मूड में है कि वो अपने भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं उस समय. And then he goes home and he plays like he's sleeping. और वो घर जाते ही वो लगता है कि जैसे वो सो रहे हैं. And Mother Yashoda comes in, oh, I hope you had a good night's rest. और यशोदा माँ आती है, बोलती है अच्छा मुझे लग रहा है तुम्हारा अच्छा नींद हुआ होगा रात को. And Krishna will go, oh yes. और भगवान जो अंगड़ाई लेके बोलते हैं हाँ अच्छा नींद हुआ. So this is the Supreme Personality of Godhead. ये है परम भगवान श्री कृष्ण. He doesn't sleep because he's blissful. वो सोते नहीं है क्योंकि वो बहुत आनंद में. And therefore, when we're a little advanced in Krishna consciousness, we say, we see the spiritual master that Krishnanandaya as always absorbed in the bliss of Krishna consciousness. तो हम जब देखते हैं कि थोड़े हम प्रगति करते हैं, हम देखते हैं गुरु जो लोग होते हैं वो हमेशा कृष्ण आनंद में रहते हैं हमेशा. And therefore we see great personalities, they sleep very little. इसलिए हम देखते हैं कि बड़े महान व्यक्ति लोग बहुत कम सोते हैं. Srila Prabhupada would sleep 3.5-4 hours a day. प्रभुपाद जी 3-3.5 मैक्सिमम 4 घंटा सोते थे. Bhaktivinoda Thakur would sleep 3 hours a day. भक्त ठाकुर केवल 3 घंटा. 6 Goswamis would sleep 2 hours a day. 6 गोस्वामी केवल 2 घंटा. Raghunath Das Goswami 1 hour a day. रघुनाथ दास गोस्वामी 1 घंटा. So as we approach Krishna, we also become anidra. जैसे जैसे हम कृष्ण के आगे बढ़ते हैं कृष्ण की तरफ, हम भी अनिद्रा हो जाते हैं. And even when we're sleeping, we're thinking about Krishna.
और अब जब हम सोते भी हैं तभी हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं. I was telling the devotees yesterday, one time Srila Prabhupada, when he came back in Los Angeles from his morning walk, एक बार प्रभुपाद जी जब अपने मॉर्निंग वॉक से लॉस एंजलिस में टेंपल में आए थे, there would be one devotee waiting at the door with the Maha sweets. He would give Prabhupada one burfi, one तो pera. गेट पर एक व्यक्ति महास्वीट जो सुबह ऑफर हुआ है भगवान को वो लेके खड़े होते थे प्रभुपाद जी के लिए. And then all the sannyasi, older devotees, they would get some maha. और फिर जो है सन्यासी सब डिवोटी प्रभुपाद जी को कुछ महाप्रसाद देते थे. So one devotee said, Srila Prabhupada, maha is so auspicious. Why did the 6 Goswamis just eat a little palmful of butter or something? Why didn't they take mahaprasadam like we are? No. तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद ये महाप्रसाद कितना महान है, कितना टेस्टी है, तो एक गोस्वामी लोग खाली थोड़ा सा छाछ और क्यों पीते थे, हम जैसे इतना महाप्रसाद क्यों नहीं खाते थे? And Srila Prabhupada said, they are always taking mahaprasadam. प्रभुपाद जी का वो लोग हमेशा महाप्रसाद खाते रहते थे. Because all night long they are simply meditating on Krishna, how he is eating, how he is walking, how he is associating with his devotees. क्योंकि वो रात भर यही सोचते रहते थे कि कृष्णा कैसे खाना खा रहे हैं, कृष्णा कैसे घूम रहे हैं, कृष्णा कैसे लीला कर रहे हैं. And Krishna gives them maha. और कृष्णा जो अपना महाप्रसाद उनको देते हैं. They don't need the maha of this world. They get maha from Goloka Vrindavan. उनको इस दुनिया का महा नहीं चाहिए, उन लोग को डायरेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड से महा मिल रहा है. Even one time Raghunath Das Goswami, he woke up after 1 hour sleep. एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी 1 घंटा सोने के बाद उठे. And he had a stomach ache, a very bad stomach ache. उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था. So they called Kaviraj. Kaviraj came and said, oh, indigestion. तो एक कविराज को बुलाया, कविराज ने हाथ नाड़ी देख के बोला कि अपच हो गया इनके पेट में. Devotees said, how can he have indigestion? He eats 1 palmful of food a day. बोले इनको अपच कैसे हो सकता है, ये तो एक मुट्ठी थोड़ा सा खाना खाते हैं दिन भर में. Kaviraj said, no, indigestion. कविराज ने कहा नहीं हुआ इंडाइजेशन इनको. And then Raghunath said, well, last night I was dreaming of Radha and Krishna. पिछले रात को मैं राधा और कृष्ण की लीला में शामिल था. And Radharani had a big plate of Mahaprasadam. और राधा रानी के हाथ में एक बड़ा सा प्लेट इसमें महाप्रसाद था. And she gave it to me and I ate it all. उन्होंने मुझे दिया और मैं पूरा खा गया. So these devotees are so advanced that even they experience what they experience spiritually even manifests on the material platform. तो ये लोग इतने महान भक्त थे कि जो वो आध्यात्मिक जगत में अनुभव करते थे वो भौतिक जगत में उतर जाता, भौतिक शरीर में उतर जाता था. And I will conclude just with one pastime that shows this. और महाराज बता रहे हैं कि मैं एक और लीला सुना चाहता हूँ अभी. One time Pundarik Vidyanidhi and Swarup Damodar, they were very close friends. तो एक समय पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर बहुत अच्छे मित्र थे, वो घनिष्ठ मित्र थे. So they were in the Jagannath temple during the Odhana Shastra, when they give new cloth to Jagannath. तो वो लोग जगन्नाथ मंदिर में थे, ओढ़न षष्ठी का दिन था जिस दिन जगन्नाथ जी को नया कपड़ा पहनाया जाता है. So you know when you buy new cloth in India especially, it's full of starch, especially silk. तो जब आप भारत में कोई नया कपड़ा खरीदते हो, खास करके कोई मखमल हो, सिल्क हो, तो उसमें बहुत स्टार्च होता है. So they were putting this starch cloth, it's like very stiff, on the deity. तो वो स्टार्च क्लॉथ को वो लोग पूरा फंसा के पहना रहे थे जगन्नाथ जी को. So Pundarik Vidyanidhi said, this is not proper. पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा ये सही नहीं है. They should wash the cloth first. It is contaminated and uncomfortable for the Lord. उसको धोना चाहिए अच्छे से क्योंकि वो भगवान को कंफर्टेबल नहीं है. And Swarup Damodar said, no, this is the local custom. तो स्वरूप दामोदर ने कहा नहीं यही यहाँ की परंपरा है, आप इसको मत डिस्टर्ब कीजिए. Pundarik said, no, this is not proper. पुंडरीक विद्यानिधि ने नहीं ये सही नहीं है. So they had a little argument. तो उनके पीछे बहस होगी थोड़ी बहुत. So they both went home. अपने अपने घर चले गए वो. And then that night Pundarik had a dream. और उस दिन रात को पुंडरीक को सपना आया. Jagannath and Baladev, they came in his dream and they were slapping him in his face, like this. जगन्नाथ और बलराम जी आए और बहुत धोए उनको रात को सपने में, बहुत मारे, पिटाई किए. And they said, we like the way our devotees serve us here. वो बोले हमें वही पसंद है जो हमारे भक्त यहाँ में सेवा करते हैं. Don't try to change it. तुम उसको चेंज करने का प्रयास मत करो. So the next morning, Swarup Damodar came to
to call Pundarik. तो अगले दिन स्वरूप दामोदर आए पुंडरीक को कॉल करने के बुलाने के लिए. But when Pundarik looked in the mirror, his face was red. No. तो जब उन्होंने अपने शीशा में देखा तो उनका गाल पूरा लाल हो गया था. So he didn't want to answer the door. How is he going to explain this? No. तो उनके पास कोई उत्तर ही था. क्या बताएं वो किसको? You know, it looks like somebody looked like he got in a fight. You know, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी झगड़ा कर लिए. So finally he opened the door and Swarup Damodar said, "What happened?" और जब दरवाजा खोला स्वरूप ने कहा क्या हो गया तुमको? And he had to say, he had to tell the truth. उनको सत्य बताना पड़ा. And Swarup Damodar offered him obeisances, and he said, many devotees dream about the Lord and have even participate in his lila. तो स्वरूप दामोदर ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान के, कितने सारे से भक्त हैं जिनके सपने में भगवान आते हैं और वो लीला में भाग लेते हैं. But you are the greatest devotee. लेकिन आप जो है सबसे महान भक्त हो. Because even your dream becomes manifest on the external platform. क्योंकि आपका सपना भी आपके शरीर में जो है उतर के आ गया है. So this is what it means to be anidra. इसका मतलब है अनिद्रा होना. So this is awaiting us. No, this is not something imaginary. No. तो ये कोई काल्पनिक नहीं है. हम सबके साथ हो सकता है ऐसा. We just have to do what Srila Prabhupada said in his lecture just now. और हमें वही करना है जो प्रभुपाद जी ने अभी अभी लेक्चर में हमें कहा. We have to chant without offenses. हमें बिना अपराध के जप करना है. Then the whole spiritual world will open up to us. और हमारे लिए सामने सारा आध्यात्मिक जगत खुल जाएगा. But as long as we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, no, and distracted, then we will have to struggle. लेकिन जब तक हम अपराध युक्त जप करेंगे तब तक हमें बहुत तकलीफें आएगी. हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा. But don't worry, Krishna has a solution for you. बट आप चिंता मत कीजिए. भगवान के पास एक सॉल्यूशन है आपके लिए. Yasyaham anugrinami harisye tadjanam shanai. When he wants to favor you, he sees you're serious but you're still distracted. He will take everything away. भगवान देख रहे हैं कि आप सीरियस हो लेकिन आप थोड़ा सा भ्रमित हो गए हो तो भगवान सब कुछ छीन लेंगे आपका. Then then even your family members, swajana, they will reject you. Oh, this person is useless. It doesn't make any money. No. आपके परिवार वाले भी आपको फेंक देंगे उठा करके, बोलेंगे बेकार है ये इंसान. And then you will have to depend on Krishna. और उस समय आपको कृष्ण पर निर्भर होना पड़ेगा. So if you don't want that to happen, अगर आप नहीं चाहते हैं सब साथ हो, then chant very seriously without offenses. इसलिए अच्छे से जप कीजिए बिना अपराध के. He still may take it away. No. बट फिर भी वो ले सकते हैं, उनकी इच्छा है. But if he does, you will be very happy. No. लेकिन जब वो ले लेंगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे. Right now, it's not Krishna taking everything away; it's our karma. No. अभी जो है वो कृष्णा नहीं ले रहे हमसे, अभी हमारा कर्मा हमसे सब छीन रहा है. But Krishna gradually manifests through that karma and helps us to realize that this material world is not my home. लेकिन कृष्णा उस कर्म के द्वारा ही हमारे समक्ष आते हैं और हमें बताते हैं कि ये भौतिक जगत हमारा असली घर नहीं है. This material world, as Krishna says, dukkhalayam ashashvatam. ये भौतिक जगत दुखालय मशाश्वतम है. We can see the dukkha, but sometimes we can't see the shesha. तो हम लोग को दुखालय तो दिखता है, लेकिन ये अशेष है वो हमें नहीं दिखता. So we think, let me try to enjoy a different way. No. तो हम सोचते हैं कोई दूसरे तरीके से भोगने का प्रयास करते हैं. This type of enjoyment gives me a problem, but let me try. Let me move to another country where I can enjoy in a different way. हाँ, इस यहाँ पर मुझे बहुत दुख आ रहा है, चलो दूसरे देश जाते हैं, वहाँ बड़ा मजा आएगा. But as it says here, Krishna is everywhere. बट जैसा कहा गया कृष्ण तो हर जगह है. So once you surrender to him, he has you hooked, and so don't try to resist. Try to surrender. तो लेकिन जब आप एक बार आपने शरणागत ले लिया भगवान का, तो भगवान आपको पकड़ लिया है, इसलिए आप उनको शरणागत हो जाइए अच्छे से. So these are some thoughts on this verse. I'll stop here. Any comments? Any questions? तो महाराज यहाँ पर विराम दे रहे हैं. आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए. हरे कृष्णा. Most intelligent person, but and Lord gives the intelligence. So why that intelligence gets diluted? Like, because intelligence is given by the Lord, the buddhi is given by the Lord, but still why he was not unable to get that understand the Krishna? And many times we see in today's
Srinivas, most of the intelligent person they are not able to understand the God. What is the reason for that? And how we? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज ने बताया बुद्धि के बारे में, महाराज ने बताया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े बुद्धिमान थे, तो ऐसा क्यों होता है कि जब बुद्धि भगवान देते हैं तो बुद्धि जो है वो विपरीत दिशा में कार्य करती है? क्यों भगवान ऐसा बुद्धि नहीं देते कि वो भगवान को जान जाए? जब बुद्धि भगवान ही देते हैं तो वही बुद्धि देना चाहिए जिससे हम भगवान को जाने, ऐसा क्यों होता है? Because he wasn't associating with the Vaishnavas. क्योंकि वो भक्तों के साथ संग नहीं कर रहा था. If you don't associate with the Vaishnavas, then you will understand Krishna according to your own limited intelligence. तो अगर आप भक्तों के साथ संग नहीं करेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे, तो आप कृष्णा को अपने सीमित बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे. If Brahma couldn't understand, what to speak of Einstein? No? ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो आइंस्टाइन कौन है? But Srila Prabhupada said, even a 5-year-old child can understand. प्रभुपाद जी ने कहा था एक 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है. Here in Mumbai, he had this little girl, Saraswati. No? हाँ, तो यहाँ मुंबई में एक छोटी बच्ची थी सरस्वती. And he would say, Krishna is so merciful, anyone can understand him. तो प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, बोले थे कि कृष्णा इतने दयालु है, कोई भी उनको समझ सकता है. He would call her and he would say, who is Krishna? तो वो सरस्वती को बुलाते थे, बोलते थे कृष्णा कौन है? And she would say, Supreme Personality of Godhead. और वो कहती थी परम भगवान है कृष्णा. And Prabhupada said, just see, she is most intelligent. No? प्रभुपाद जी कहते हैं देखो ये सबसे बुद्धिमान लड़की है, बुद्धिमान व्यक्ति है. So it doesn't require brain power, it requires surrender. तो ये ज्यादा बुद्धि का काम नहीं है, इसमें हमें शरणागति का काम है. And therefore Brahma is saying that Krishna, you control the intelligence, therefore please control my intelligence so it is focused on you. तो इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप सभी बुद्धियों को संभालते हैं, तो इसलिए मेरी बुद्धि को संभालो कि मैं आपके चरणों में आ जाऊं. Maya pita mano buddhir, no? Let my intelligence and my mind just worship you. तो मेरी बुद्धि और मेरा मन जो है आपकी ही उपासना करे, ऐसी कृपा करो. और कोई प्रश्न किसी का? यस प्लीज. Microphones for everyone. I'm living in Kharghar only, so we have a lot of friends, company friends, relatives. So we are sometimes not happy because they sometimes control our times, go to this party, that party, whatever. So we thought if we go to Vrindavan, so we get out of all this commitment and we are more happy. So it's a illusion or bhakti. Yes, Prabhupada said you cannot go to Vrindavan. I'll repeat. Oh, I'm sorry. Sorry. सो प्रभु जी का प्रश्न है, कभी कभी हमारे जो मित्र होते हैं या परिवारजन होते हैं वो हमको बोलते हैं पार्टी में आओ, ये करो वो करो, पूरा टाइम खा जाते हैं. तो हमको लगता है जब छोड़ छाड़ के भागो वृंदावन, और वृंदावन जाएंगे तो हम बड़े खुशी हो जाएंगे, सुख हो जाएंगे. तो क्या ये भ्रम है कि ये भक्ति का लक्षण है? So Prabhupada said you can't go to Vrindavan by purchasing a ticket. No. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप वृंदावन खाली टिकट खरीदने से नहीं जा सकते. Because Vrindavan is protected by Pradamaya. क्योंकि वृंदावन जो है वो भगवान योग माया से प्रोटेक्टेड है, उसको सुरक्षित है. Special form of Maya that doesn't allow people who are not surrendered, they cannot see the reality of Vrindavan. तो ये माया की एक स्वरूप है जो लोग भगवान शरणागत नहीं है वो वृंदावन को असली रूप में नहीं देख सकते. Because many people come here, but they're not coming to surrender to Krishna, they're coming, Krishna, give me some blessing, give me some benedictions. तो जैसे यहाँ भी काफी लोग आते हैं और वो लोग भगवान के पास शरणागत होने नहीं आते, वो भगवान से कुछ लेने आते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो. So they'll get some little blessing, some benediction. तो वो लोग ये ब्लेसिंग लेने ही आते हैं. But they won't get prema bhakti. लेकिन उनको प्रेम भक्ति नहीं मिल सकता. So that is our duty to show people how to surrender to Krishna. और हमारा कर्तव्य है कि हमें लोगों को सिखाना है कैसे भगवान को शरणागत होए. I was mentioning the other day that actually the grihastas are the most important preachers. तो महाराज बता रहे थे कि गृहस्थ लोग जो हैं वो सबसे बड़े प्रचारक हैं. No, people speak to a brahmacharya, they say, oh, I can't live like that. No. तो जब ब्रह्मचारी से लोग बात करते तो उनको लगता है अरे हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते. But when a grihasta, they have no excuse. No. लेकिन गृहस्थ से बात करेंगे तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं है. He's also married, he's also working. No. तो गृहस्थ लोग भी हैं जो वो लोग भी शादीशुदा है, वो लोग भी जॉब करते हैं, काम करते हैं. But most importantly, he's worshipping Krishna. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है. So therefore all the grihastas have a very special duty. No. तो इसलिए सारे गृहस्थों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है.
Brahmacharis have it easy. No? तो Brahmacharya is very easy for them. तो ब्रह्मचारी जो है वो उनके लिए इतना आसान नहीं है उन लोगों के लिए. They just live in the ashram. They can worship Krishna all day long. No? तो महाराज बता रहे सॉरी ब्रह्मचारी लोगों के लिए भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वो आश्रम में रहते हैं और मंदिर में रहते हैं. Grihastas, they have to go out, do business, and then they still have to worship Krishna all day long. लेकिन गृहस्थों के लिए उनको बाहर जाकर काम करना पड़ता है फिर भी भगवान की उपासना करनी पड़ती है. So big responsibility. No? ये बड़ा जिम्मेदारी है. Therefore, Srila Prabhupada said, Grihastha life means little tiny license to enjoy. No? तो इससे प्रभा जी कहते हैं गृहस्थ मीन्स थोड़ा सा उनको बस छूट दिया गया है एंजॉय करने के लिए. Not 25-year vacation for Maya. No. ऐसा नहीं 25 साल के लिए माया का वैकेंसी दे दिया उनको, माने वैकेंट हॉलीडे दे दिया है, एंजॉय करो. And most people extend it beyond 25 years. No. और आजकल तो बहुत सारे लोग 25 साल के भी आगे जा रहे हैं. 30, 35, 40. No. 30, 35, 40. One person asked me once, what is the real meaning of Grihastha life? No. तो एक बार एक व्यक्ति महाराज से पूछा कि गृहस्थ लाइफ का असली मतलब क्या है. I said, it means you must surrender to Krishna. तो महाराज ने कहा कि आपको कृष्ण को शरणागत हो जाना चाहिए. Not that I spent 25 years to be where I was 25 years ago. No. इसका मतलब ये नहीं है कि 25 साल बाद आप वहीं रहो जहां 25 साल पहले आप थे. No. So it's not just like 25 years lost in space. No. 25 साल जो है हवा में खो गया. It means that one must strive always to give Krishna consciousness to others, as Srila Prabhupada says here, by Lord Chaitanya's mercy. तो इसका मतलब है कि हमेशा गृहस्थ को प्रयास करना चाहिए कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में. Hare Krishna. हरि बोल. So thank you all very much for your kind attention. Srila Prabhupada ki जय. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki जय. Nitai Gaur Premanandi. हरि हरि बोल. परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी महाराज की जय. Krishna Krishna Hare 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 Rama